Now we are entering in the third technical session of today, which is based on criminal law. Now I request to our dignitaries, distinguished speakers and session moderator to kindly occupy the chair on the dais. Session moderator Dr. M. Rajendranji, IES, retired, recipient of Sahitya Academy Award and Director, KMMC Medical College, Mattam, Kanyakumari, Tamil Nadu. Our distinguished speakers are Professor Brajakishore Swain, former head in department, Dharmasastra Vibhag, Shri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya, Odisha. Dr. Sunil Sondhi, Tagore National Fellow, Indira Gandhi National Center for the Arts, New Delhi. Dr. Ajay Singh, Assistant Professor, Faculty of Law, Banaras Hindu University. Dr. Divya Bharti, Assistant Professor, Department of Sanskrit, BHU. Dr. Ruchi, Assistant Professor of Sociology, Banastali Vidyapith. Mr. Kosraj Neumann, PhD Scholar, Parul University. Professor Dr. Devarati Haldar, Professor of Law, Parul University. मैं पुनः अपने सभी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर से आग्रह करूंगा, कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। अब इस तृतीय सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन सचिव श्री अनूप कुमार जी से, डॉक्टर अनूप कुमार जी आए और हमारे सभी अतिथिगणों का सम्मान करें। Dr. Ajay Singh, Dr. मंच इस सेशन के मॉडरेटर डॉक्टर एम राजे। Normally, sometimes the bridegroom might escape. It happens not regularly, one or times he may escape. Today the bridegroom is Professor A.K. Pandey. He is a professor, faculty of law, Banaras Hindu University. Since he is absent,
I have been selected as a bridegroom from among the invitees. So I have come to this thing. I thank that I have never dealt with criminology as an officer, IAS officer. I have dealt with the criminal cases only. I have not seen criminals. In fact, the German philosopher Nietzsche would say that it is high time that the Western philosophers on criminology should be forgotten and Manu has to be remembered, he said, Nietzsche. In fact, we are all know about the mens rea and actus rea and all that, and the relationship between the two. I quote only one incident and I will straight away go, because I will give you another happy news. Instead of 8 speakers, we have only 6. And another good thing is, we have got 2 ladies. So I can't promise that we will be able to finish in time. Yeah, we can't check. I can't check them also. So my hands are tied, and but they know the responsibility. In fact, during the Second World War, there was one person in Germany who spoke very ill of Hitler. I am talking about the theory and practice. So this fellow talked very ill of Hitler, and he was tried and he was given hanging as punishment. But before it was executed, Hitler died. So then the problem with the person was, his wife has disowned him because he spoke ill of Hitler and went with his lover. So he wanted some excuse to leave her husband. So she said he spoke ill of Hitler, and then he joined her lover. After the Second World War, this case came for a retrial, and the judges inquired, and then they cancelled the murder, they cancelled the hanging order, and they released him. They said, this is a law, but it is so evil, we will refuse to implement it. This is the difference between theory and the practice. So we have got very valuable speakers now. I will welcome one by one. I think first in the list is Professor Brajakishore Swain. He was formerly head of department, Dharmasastra Vibhag, Shri Jagannath Sanskrit Vishwavidyalaya, Odisha. He has taught Dharmasastra in the postgraduate department of Dharmasastra, Shri Jagannath Sanskrit University, Puri, for many years. He is credited by about 25 books and more than 60 research papers in Sanskrit, English, Oriya, and Hindi. He is also associated with the Utkal Sanskrit Research Society, Puri. I once again request and welcome Mr. Professor Brajakishore Swain to speak on criminal law and Vedic jurisprudence. Not classify disputes as civil and criminal. This distinction made now is based on the procedure laid down for the two. All civil matters are disputes between the competing parties who have to contest each other's claims in the court themselves. Criminal matters, on the other hand, are ones
where the state takes up the case on behalf of the aggrieved party and collects and produces evidence and conducts the trial. However, in the Dharmasastra's tradition, only the Prakirnaka section contains offences in which the state can take so much action against the offenders. Therefore, even for matters involving theft and murder, the same procedure is to be followed as for delay in delivering the goods sold to a purchaser. A broad distinction is sometimes made between disputes arising out of wealth and those arising out of violence. But this will not cover Stri Purusha Dharma Prakarana. This paper deals with the following titles of a dispute. They are Parusya, Sahasa, Steya and Stri Sangrahana. In the section on Parusya, the expression Parusya signifies injury both mental and physical. These sections contain offences relating to injuries caused by words and deeds. Hence, the categorization into Bhakparusya, that is injury by words, and Dandaparusya, that is injury by physical assault. Nibandhakaras in Dharmasastra have followed the earlier Smriti classification of the law into Bhakparusya and Dandaparusya, and it is proposed to study these sections in this paper. Leading authors and commentators have used more or less the same material from the same sources and have given scant comments. The reason for the status quo in the law of Bhakparusya may be found in Devana Bhatta's Smriti Chandrika, who says that unlike many of his contemporaries, he had avoided many minor details of offences under Bhakparusya because kings in his times were not keen to enforce those laws. Dr. P.V. Kane, the distinguished author of History of Dharmasastra, has cited the view of Madana Ratna that the kings in its times were not keen to enforce many of the rules under Bhakparusya and Dandaparusya because they fear adverse reaction from the people. It is submitted, however, that the most plausible explanation for the reduction in offences under Bhakparusya seems to be that the offences left out by Devana were so trivial that none would be encouraged to raise them before the king. Thus, far from showing any decline of Hindu law, this development only shows that the medieval authors wanted to systematize law and create codes which were more effective and practical. Chandeswara, Madhava and Varadaraja, the distinguished Nibandhakaras of India, mention the offense of Akhyarana, that is speaking impolitely with one's parents, wife, sons and teachers. By way of a comment, Vigyaneswara, the celebrated commentator of Yajnavalkya Smriti and author of Mitakhyara, says that the offense of Akhyarana of the parents is not mitigated by if it can be shown that parents were on the wrong and that the accused had only reacted.
On the other hand, the same circumstance can help one accused of achyarana of his wife. This implies that the law expects a person to show respect to parents under all circumstances, but recognizes the husband's right to correct his erring wife. Madhvacharya has also given a similar comment, but without acknowledging Vijnaneshwara's debt. In keeping with his assertion that the specific offences under Vakparusya had become obsolete and were no longer recognized as offences, Devanabhatta has made a very significant change in his presentation of the law on the subject. Instead of mentioning the different offences as the other digest writers have done, Devanabhatta simplify the general principles of criminal jurisprudence. It appears that his plan is that whatever the nature of new offences under the newly emerging social conditions, the law on the subject should be governed by those principles. Other authors of the period have also discussed these principles, but Devanabhatta's peculiarity is that he has mentioned only the principles and not the substantive law on this subject. Among the principles mentioned are unequal punishment for the same offense depending on the varna of the victim and the accused. Second, exclusive joy and anger are mitigating circumstances. Third, a bona fide act done in good faith is not culpable. Fourth, where two parties are guilty of committing the same offense against each other, the one who initiates the process is more guilty. Fifth, the party which continues with the offense while one has stopped is more guilty. Nibandhakaras give an exhaustive collection of almost similar material from almost the same sources, and in the process repetitive and even contradictory or at least overlapping. Devanabhatta's approach is different than in the section on Vakparusya, where he had declined to go into many offences, saying that they had become obsolete. In the present section, he cites almost the same rules as the others digest writers of the period. It is submitted that cases of physical violence with which Dandaparusya deals by nature require the intervention of a powerful agency, and the medieval writers therefore continued to vest the state with wide powers to adjudicate upon such matters. One merit in the presentations of the Nibandhakaras is that they have arranged verses from diverse sources in a logical order. The Vibhag Ratnakara of Chandeswara, for instance, starts with simpler offences causing simple hurt and then gives more serious offences. It starts with sparsana, that is defiling with touch, and moving through udgurana, that is raising hand or a weapon with the intention to scare or to hurt, to causing hurt without blood, skin deep, muscle deep and bone deep injuries, breaking bones, mutilation and severing of organs
it covers a wide spectrum of actions. The Ratnakara also adds separate sections on liability in accidents, injury to plants and animals. It then mentions some general rules regarding compensation, exculpatory and mitigation circumstances, etc. The Vyavahara Nirnaya also follows the same pattern. Madhavacharya discusses in Parasara Madhavya, the commentary of Parasara Smriti, the same topics, but mentions the general rules first. Manu had recommended Badha as punishment for a Shudra if he spoke angrily to a Brahmana. In the text, Badha inter alia means death penalty. Vijnaneshwara has clarified that in the present context, however, it means only beating, taranam. He thus tones down the punishment, indicating that caste considerations in the matter of punishments had become considerably diluted. Lakshmidhara argued for this change in the laws of discriminatory punishments. Several smritis had prescribed very harsh punishment for a Shudra who indulged in Bhakparusya or Dandaparusya against a Brahmana. Lakshmidhara, the author of Kritya Kalpataru, cites Gautama Dharmasastra, who had prescribed amputation as punishment in this case. But then he dilutes the rigor of this punishment by attaching several conditions. Relying on the expression Abhisandhaya, he said that the offense should be premeditated and planned for the punishment to be awarded. Secondly, relying on the expression Abhihatya, he said that for the offense of Dandaparusya, the Shudra should hit the Brahmana with a fierce weapon. With these two conditions, imbued into the definition of the offense, it was probably expected that prescribing amputation as punishment would become more difficult. Because of a sleep received by me, I conclude and finalize my paper. Thank you very much. There is no distinction between civil and criminal law in the ancient times. But our kings used to inquire very detailedly. For example, in Ramayana, Surpanaha, her nose was cut. Professor was talking about the mutilation. Her nose was cut. And she went and complained to her all-powerful brother, Ravan, about for which this had happened. He didn't take his sister's words as it is. He asked what you have done. So that kind of impartiality they maintain. Now I call upon Dr. Sunil Sondhi. He is a Tagore National Fellow working in the Indira Gandhi National Center for Arts, New Delhi. He has done MA and PhD from the University of Delhi and postdoctoral research from the University of Toronto, Canada and George Washington University, USA. Professor Sunil Sondhi is a distinguished scholar in the field of intellectual communication and conflict resolution, international relations, education. He will speak on concept of punishment in Vedic tradition and integrated view of letter and spirit of law. Professor. It's a pleasure to be here. All the respects to my colleagues, particularly
Professor Swain, from whom I am learning Dharmasastra. It's a privilege. And of course, all the students who are present here. I'll begin with you. Right? I still have a book which was given to me by my teacher when I was a student of your age. And that book is on the net. And the title is The Tyranny of Words, if you have not seen it before. Written by Stuart Chase and sometime in the 1930s. I have been a student of political science. So when my professor gave me a book on English language, I was surprised. So he said, if you read this, you will better understand political science. And I'm a little hesitant, but I wanted to suggest that probably law can also be better understood if we have a feel of what language means and stands for in our tradition. Right at the introduction, Stuart Chase says, do I know what I want to say? And am I using words to convey what I say? And does the audience have the same concept of those words which I have? And can they derive the same meaning which I am trying to convey? And he finally concludes, it's not so simple. And bulk of the problems, he said, relating to education and studies, stems from language. We mean something else, speak something else, gets conveyed something else, and is understood in a very different way. What's more important is the examples that he gave, and the examples were the subjects of philosophy, the subject of political science, and subject of law. That's where most misinterpretation takes place. This is the time when a lot of other people, including nuclear physicists, were saying the same thing. Reality is not what it seems. Even today people are saying that. In our own tradition, Rabindranath Tagore was saying that around the same time. Aurobindo Ghosh. And much before this, actually, Swami Vivekananda said the same thing in late 90s. He was looking at the concept of identity of matter and energy already in 1895. And he was speaking to scientists in the US, how soon will you be able to prove this? He had the idea from Vedanta, from Upanishad, from Ved, because it's there. And it was proved in next 10 years when theory of relativity came. And then quantum physics, which settled the issue forever. Matter is energy, energy is matter. Now, what does this have to do with language or law? What science found in the first half of 20th century, Bhartrihari, an Indian linguist, had said 1500 years ago in Vakyapadya. Almost the same thing, word by word, if you read Stuart Chase, it's there in Vakyapadya. Words mean different things at different times and places. And before Vakyapadya, another 1000 years,
Panini and Patanjali had also said the same thing, that words mean both the concrete and the ideal or the idea. And when it means the concrete and when the idea depends on the context. And even before these people, another 1500 years back, Rig Veda is already saying the same thing. Rig Veda, the earliest of the scriptures, that word is in 4 stages. Most of the people, like me, are aware only of the 4th. 3 have to be imagined. And the last one, Para, Pashyanti, Madhyamika, Vaikhari, these are the 4. Para is the spirit. Today's understanding of consciousness is the same that our scriptures say about the understanding of language, that the abode of language is in the sky because it's energy. And what you use here today, or what I'm doing here today, is manipulating that energy. And I try to do it according to the context. And the words I utter depend on my background, mental. And what you understand depends on your mental background. The connection with law is also very clear. We talk of positivist law. But by this time, by earlier 19th century, it had already been overtaken. We are still clinging on to it. Positivist law hai, determinist law hai, law ne jo keh diya wo final hai. 100 years ago that was gone. Because after theory of relativity came, it was clear that no word is deterministic. It means so many things. And nothing that we see is deterministic, because it can also mean so many things at different times. So there is uncertainty. One need not, get worried about it. It's inherent in reality. The reality is dynamic. It is multifaceted. It changes. It is emergent. Every moment, new energy is emerging. So even in the early 20th century, 100 years after these things came to be, then we already have the concepts of legal realism, legal pluralism, and now in the 21st century we have, or maybe the late 20th century, we have the concept of legal culture. What legal culture theory says is that law is embedded in a culture. Then if a law from one society is transplanted to another, it's not going to work. The objective will not be realized. The reality will not be understood. And the rectification will not be done. Because the whole concept is foreign, transplant for most people. That is the reality in India. Not in Delhi. And maybe not in Varanasi also, but Varanasi and Delhi are not India. And that is one reason I suspect that you often see people who have been convicted and also have been to prison, when they come out, they are welcomed with garlands. They go on to become again ministers and high officials, and their families also continue to rule over states. Why? Because the two concepts are different. अगर 10,000 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हो गया, तो पॉजिटिविस्ट लॉ में और इंडियन पीनल कोड के हिसाब से आपने 10 साल लगा दिए उसको प्रूव करने में, और एस्टेब्लिश्ड है, और उसका जो पनिशमेंट है वो 10 years या 15 years है, फाइन. But this gentleman goes to the people and says, गाय चारा खा गई तो क्या हुआ? ये लोग कहते हैं कि मैंने 10,000 करोड़ का घोटाला किया, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास गाय नहीं है, वो ज्यादा चारा खा गई. Simple. People understand that. They have not read Indian Penal Code. They have never been to court. They have never seen a judge. मैंने भी जितने
ब्लैक कोट्स और ड्रेसेस में लोग यहाँ देखे हैं, मैंने आज तक नहीं देखे. I mean, common people, around 90% of the people, if I make a rough, guess, do not know about criminal law or crime. They haven't seen a crime being committed anywhere till very late. जब भी ये झगड़े या मर्डर या किसी चीज की बात आती थी, चोरी की भी बात आती थी, तो ना कभी सुना होता था, ना कभी देखा होता था, सिर्फ टीवी या न्यूज़पेपर में पता लगता था. Even now, all these heinous crimes, I mean, nowhere in our community in which we live, the colleges, universities, we don't see that. So this is the positivist concept of law that has been already challenged, and the objective of this presentation is to use the Vedic tradition to pull the carpet from under this concept. It is absolutely irrelevant. It needs to change, but yes, since it is there in the statute, so probably we will have to take the way of interpretation. So now I come to the, ये मैंने vision in long darkness इसलिए लिखा. There is a book by Vasudev Sharan Agrawal, and that is only, the whole book is on only one sukt of Rigved, entire book, and it's on the net. वो publication पता नहीं क्यों उसका खत्म हो गया. It's not on the net. Just go ahead and read it. Initially you will find it a little difficult, but then at the very beginning he says these are the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 principles that I derive from Vedas, and these are there in this sukt. The language used is symbolic, the language of nature, of trees, of rivers, of clouds, mountains. But the words used have to be interpreted in this way, and if you interpret in this way in Indian tradition, then this is what it means. और उसमें बहुत fundamental basic चीजें जो वेदांत की हैं, उपनिषद की हैं, वो उन्हीं 10 principles में हैं. So just have a look. I mean, it's not going to take long. Just take it out from the net and maybe save it and try to read it. So the word used here is vision in long darkness. Actually what it means is vision of hidden dimensions of reality. There is so much you can't see. But with the third eye, as they say, with darshan, with closed eyes, you can have an idea what this reality is at the infinite level and at the infinitesimal level also. Sukshma or sthul, दोनों, भाषा और कानून दोनों की पहुंच से बाहर हैं. Mind operates at the level of consciousness, at the level of energy. What is really in the mind of a judge or the criminal, nobody will ever know. अब जितने भी टेस्ट कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, what actually, because if you look at neuroscience and the advances that it has made, the whole brain and thinking is so complex that it is just impossible to make sense of what is in there. You can make sense only when action takes place, when interaction takes place. What actually goes on here, or probably even the person whose mind it is, even he or she does not know. There are billions of neutrons interacting with each other. और उसमें खाली इलेक्ट्रिक करंट्स हैं जैसे मोबाइल में होते हैं, कोई मैसेज नहीं है, लेकिन वो मैसेज की शेप तब लेता है when we interact. So it is emergent, it is uncertain. Another example I will give you, and then I'll come to a case. Yes, I was expecting that. Thank you. But this was the essence, and I will continue with the case, which shows what I wanted to say. Actually, I was looking for a case, और वो इतने cases होते हैं वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन 2 जनवरी को एक judgment आया Supreme Court का on the demonetization case. The moment I read
I could make out there is something for me to go into the details, so I read the entire 288 page judgment. वो तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, लेकिन 288 में से 28 words तो मेरे पास हैं. लेकिन what is more important is कि उस judgment में जो dozens of more than 50 Supreme Court और High Court judgments दी हुई हैं, वो और ज़्यादा डिटेल बताती हैं how legal interpretation is what matters. Whatever the advocates here and there might say, what the judge is going to decide, probably even the judge does not know. Even at the moment of making a decision, there is a very good book, I'm forgetting the name, How Do Judges Judge? और उसमें जब ये क्वांटम इम्प्लीकेशन लगाया जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया जाता है, तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज देयर इज अ डेडलाइन, ही हैज टू गिव अ जजमेंट, ही कीप्स ब्रूडिंग ओवर इट, थिंकिंग ओवर इट, both the sides have made their presentation, it's very very difficult. जो easy cases होंगे कि ट्रैफिक वायलेशन हुई है नहीं हुई है, that's easy one. बट जहाँ पे एविडेंस डाउटफुल है, जहाँ पे जो केस बहुत सीरियस है, जहाँ पे जो उसकी पनिशमेंट है वो बहुत हैवी है, वहां पर he will be in two minds till the last day. And what makes the judgment? It's the context, it's not the words. जो भी किसी ने कहा वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा. So I'll read just a few lines from this. Not more than 2 minutes on this, and then I'll conclude. And you will be surprised, I was also surprised. This is Supreme Court judgment. In the context, recommendation word मैंने भी बहुत यूज किया, आपने भी किया होगा, recommendation प्रोफेसर से सबसे ली होंगी. हम लोगों ने जो रिटायर हो गए, हम देते हैं रिकमेंडेशन, तो वी नो व्हाट इज रिकमेंडेशन. बट दिस इज the judgment, the majority decision is saying, in the context in which it is used, the word recommendation would mean a consultative process. Wow, fantastic. मैंने आज तक मतलब ये मतलब नहीं कभी सुना था. Recommendation का मतलब है consultative process. With whom? When? Who consults whom? No, we give recommendation, we don't consult people. You take recommendation, ask from your head of department or whoever, an advocate or a judge, sir, please give me a recommendation. He does not discuss that. And conscious, effective, meaningful and purposeful consultation represents the essence of recommendation. Now, ये वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि वो जो RBI एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, you must be all aware that the decision on demonetization can be taken by the government of India on the recommendation of the RBI board. और RBI board ने recommendation दी नहीं थी पहले, बल्कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर विचार विमर्श करके RBI बोर्ड को बोला था कि तुम रिकमेंडेशन दो और हम इसके ऊपर डिसीजन दे देंगे. डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना था. Now look at the minority. वो करीब 200 पेज तो उस पे मेजॉरिटी के हैं, लेकिन जो ये माइनॉरिटी का एक जो जज है, उन्होंने भी उतने ही केसेस कोट किए हुए अपने सपोर्ट में. और अगर खाली आप उन्हीं की इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे तो वो ठीक है बिल्कुल. Look at what she is saying. When law is clear, that is what you believe. I don't. When law is clear, plain or ambiguous, and it is reasonably susceptible to only one meaning. When शुरू में लिखा, ठीक है? The court is bound to give effect to that meaning and admit only one meaning, and no question of construction of a statute arises. 4 people say, no, what is she saying? This is wrong. But apparently, कोई भी पढ़ेगा तो बोलेगा तो ठीक तो कह रही है, क्या गलत है इसके अंदर? यही तो है लॉ, यही तो आप कर रहे हो. The measure was regarded. Now look at how she ends, and she still doesn't agree. She has already read the majority judgment. This is written after that. The measure, that means the decision demonetization, was regarded as unlawful only as a purely legalistic analysis. Who goes for legalistic analysis these days? But she says, so she said, I am not concerned.
about the object of demonetization, whether it is socially good or bad. I know it is very good. She says that. But legally constructed, what you have done is wrong. So the majority judgment is no. The decision cannot be based on just legal construction. And there are whole lot of, आप इसको judgment पढ़ेंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट के और दूसरे कोर्ट्स के कितने decisions मिल जाएंगे, वो इस चीज को elaborate करेंगे कि context is more important. When, what, where, that is always important. Plus the mind of the judge. So these are the uncertainties, these are the ambiguities. And that is why I said decision is emergent. I personally know of cases in the university, and you must be also aware, कि आप पूरी judgment पढ़ें तो end तक ये आ रहा है कि इसके ऊपर तो ये जो accused है वो scot free हो जाएगा, freedom हो जाएगा. और last para में he is convicted. It's there. You also must be know. I know the judgments. So what happened? Well, he had facts on both sides. But in the end, his own, जिसको कहते हैं कि the roots of his decision making, they sort of propel him towards one side, and that's done. And फिर वो और अभी जो जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, दोनों जगह पे वो जो पिटिशन है वो डिसमिस हो गई. द डिसीजन ऑफ दैट जज वाज अपहेल्ड. ओके, अभी और तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो हमारा जो वैदिक टेक्स्ट है उसमें रित का सिद्धांत इस प्रकार के विधि या नियम के या ओवरऑल कॉस्मिक लॉ के बारे में बात करता है कि द होल सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय अ लॉ, एंड दैट cosmic law is reflected in the human society also in the shape of dharma and satya. शांति पर्व में जब पूछा जाता है भीष्म से युधिष्ठिर द्वारा कि सत्य क्या है, तो भीष्म बोलते हैं ये बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया. आजकल हम कहते हैं कि मुझे ट्रुथ पता है, तुम ट्रुथ बताओ, वो ट्रुथ बताएगा. तो बोल रहे हैं who knows what is truth? It will always be contextual, and he says that it is depending on the situation, but there is a lesson there. He says whatever upholds humanity, that is the truth. और अगर humanity को preserve करने के लिए, uphold करने के लिए जो factually incorrect statement भी देनी पड़े, तो that is truth. And he gives examples there. So I'll end and just conclude with the last para. The Vedic tradition, and all these texts are in that tradition, show us the value of thinking about law in close connection to both religion and life of common people. Wherever religion is there, obviously. जहाँ पे अगर कोई communist state है और religion नहीं है, तो fine, it's their problem. But in a country where 80% or 90% of the people live by religion, हर सड़क के ऊपर, हर एक गली मोहल्ले के अंदर एक मंदिर है या मस्जिद है या कुछ और धार्मिक संस्था है या गुरुद्वारा है. How can you say that my law will not take note of religion? Try and give a decision against the religion. It cannot be implemented. But yes, you have to find a middle way. You cannot also completely agree with whatever people are saying in the name of religion. Again, the same, the golden rule yahi hai. Does it serve the humanity? Does it serve the larger good of the people, of the society? If one person or one whatever saint or sage or Maulavi or priest gives an interpretation of law, कि ये religion है, मैं ये समझता हूँ ये है, but it harms most of the society, then yes, the court will go ahead and strike it down. But if something has been done to the benefit of the society, then yeah, it's very difficult. You can't do it. It reminds us that legal processes and institutions are not the exclusive province of state and legislature. Law is not restricted to state and legislature. That is what most of the people believe in, faith in. They have not seen the state or the legislature, but they have the law, their own law.
and should function in close touch with the most ordinary of human context. Every day, law should be there, and it is there. Law enables human advancement. That is the crux of the difference between the two concepts of law. Law enables human advancement as much as it constrains human follies. Follies must be restricted, but at the same time, potentialities, the ambitions, the spiritual urge must be fulfilled, and that is what our dharma and rhythm and satya concept uphold. Thank you. Thank you, Dr. Sunil. They write judgments when no judge is here. In the morning, we had Supreme Court judge, High Court judge, sitting judge, and then retired judge. So, had he spoke this way like this, not only he will be taken for contempt of court, for being a party, because we have 5 or 6, and you are also there. Conspiracy. 120B. So thank you, Professor. Now I request Dr. Divya Bharati. She is Assistant Professor, Department of Sanskrit, Banaras Hindu University. She will speak on evidence, real evidence and false evidence. When there is a real evidence, there should be a false evidence. As advocates we will be knowing, even though there is a punishment section called perjury, I think none of them have been punished. Perjury is there, and then hostile witness is there. All those things, let us listen whether these things were prevalent in the ancient India. सभी को मेरा नमस्कार। और बस एक क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ पर संस्कृत को जानने वाले कितने लोग हैं? जानने वाले इसलिए क्योंकि ये टाइटल है हमारे सेमिनार का, उसमें वैदिक जूरिस्प्रूडेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये वेद में न्याय व्यवस्था कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क। जब मैंने रिसर्च किया था, मेरा एमफिल और पीएचडी, मैं संस्कृत लेकिन मेरा जो रिसर्च वर्क है रिसर्च वर्क वो एविडेंस, और जो मेरा पीएचडी है वो इंडियन पिनल कोड पे है। और मैं एक ड्राफ्ट बना रही हूँ, एक कंप्लीट भी हो चुका है। मैं एक एंशिएंट पिनल कोड बना रही हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे डाउट्स अभी आ रहे हैं क्योंकि मेरा लॉ बैकग्राउंड नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने सुबह डॉक्टर जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे बीएस चौहान, उनके सामने भी अपने डाउट्स रखे थे, लेकिन शायद उन्होंने ये कह के इनकार कर दिया कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, इसलिए मैं आपका सही आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे आती है, आप बस मेरा आंसर आज मॉडर्न टाइम के हिसाब से दे दीजिए, लेकिन शायद उन्होंने सुनने से ही मना कर दिया। तो मेरे डाउट्स अभी भी एज इट इज है। तो मैं ये चाहूंगी कि लॉ फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं, अगर मेरे कुछ डाउट्स है जो लास्ट में मैं बताऊंगी, आप उनको प्लीज सॉल्व करिएगा ताकि मैं अपना काम कंप्लीट कर सकूं। आते हैं वैदिक न्याय व्यवस्था पे। वैदिक न्याय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट ही क्यों शुरू हुआ, हम क्यों आज के समय में इस टॉपिक को यूज कर रहे हैं और एक सेमिनार का विषय बना रहे हैं। देखिए, जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेद, आप 4 वेद जानते हैं, उन वेदों को सरलता से पढ़ने के लिए वेदांग का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये वेदांग है। वेदांग का मतलब होता है जो वेद को बड़ी आसानी से समझा सके। उसी वेदांग के अंदर एक अंग आता है कल्प। ठीक है, उसी कल्प का एक भाग होता है धर्मसूत्र। उसी कल्प का एक भाग है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र के अंदर विषयों को बड़ी श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है। समाज में ये नियम होने चाहिए, समाज में राजा के द्वारा ये दंड दिया जाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे सब बिखरा हुआ था। लेकिन जब स्मृति काल आता है 100 BC, स्मृति काल की बात कर रहे हैं हम, आज 21वीं शताब्दी के अंदर है, बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं। जब स्मृति काल आया तो स्मृतिकारों ने कहा कि हम हमारी समाज व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्यों ना इन बिखरे हुए विषयों को समाहित करें, कैटेगराइज करें। तो उन्होंने स्मृतिकारों ने संपूर्ण विषयों को, चाहे वो वेदांग से रिलेटेड हो, चाहे वेद में से रिलेटेड हो, उन सबका 3 तरह से अध्याय विभाजन किया। आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय और प्रायश्चित अध्याय। और उन्होंने कहा कि समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है समाज के नियम,
और उन्होंने आचार अध्याय जो पहला अध्याय बताया, उसमें समाज के जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो गुरुकुल व्यवस्था से हो, समाज के हर व्यक्ति के क्या क्या नियम हैं और क्या क्या उनके कर्तव्य और समाज के लिए क्या क्या उनका उत्तरदायित्व है, इन सबका पूर्ण विस्तार के साथ उल्लेख किया। उसके बाद स्मृतिकारों के मन में दूसरा विचार ये आया, हमने नियम तो समाज के लिए बना दिए, लेकिन क्या इन नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? उल्लंघन होगा तो हम किस तरह की न्याय व्यवस्था रखें ताकि समाज में ये नियम बने रहे। तब उन्होंने दूसरे नंबर पर व्यवहार अध्याय को रखा और व्यवहार अध्याय की परिभाषा दी, स्मृत्याचार व्यपतेन मार्गेण आदर्शितः परई। स्मृति आचार शब्द आया, स्मृति के आचार मार्गेण, मार्ग से, स्मृति के आचार मार्ग से, परई यदि दूसरे के द्वारा, आधर्षिता यदि आपका तिरस्कार किया जाता है, और यदि चेद आवेद यदि राज्ञ व्यवहार पदम ही तक, और यदि इस तरह का व्यवहार यदि आप राजा के सामने लिखित कर देते हो तो वो विवाद बन जाता है, और उस विवाद को नाम दिया व्यवहार पद। व्यवहार पद मतलब जब तक आपका आपसी झगड़ा था तब तक आपके बीच में था, लेकिन यदि वो राजा उस समय राजा को आज का जैसे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जैसी उपाधि हम दे सकते हैं, उस राजा को पूर्ण अधिकार होता था कि किसके संबंध में क्या निर्णय दिया जाना है, वो अंतिम निर्णय करता होता था। इसलिए बोला गया यदि वो राजा के सामने वो विवाद लिखित हो गया, उस स्थिति में वो व्यवहार पद बन जाएगा, और उस विवाद को अंतिम निर्णय तक पहुंचाने के लिए स्टेप्स थी। कौन कौन सी स्टेप थी? पहले यदि कोई व्यक्ति, वादी और प्रतिवादी का हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, जिसने एक केस किया वो वादी और जिसके खिलाफ किया वो प्रतिवादी, डिफेंडर और प्लेंटिफ जैसा कॉन्सेप्ट। अब वादी और प्रतिवादी कैसे डिसाइड होगा कौन वादी है कौन प्रतिवादी? तो जब राजा के पास केस जाता, जिसने केस दर्ज किया वो वादी और जिसके खिलाफ किया वो प्रतिवादी, फिर वो चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो। ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं, जब हम लेखन रूप दे दिया तो उसको कहते हैं भाषापात। अब बात आती है कि आपने तो केस कर दिया, लेकिन सामने वाले का प्रत्युत्तर, जिसके खिलाफ केस किया उसका तो प्रत्युत्तर जाना नहीं। फिर दूसरी स्थिति आती है, उसको कहते हैं भाषापात। ये जो चरण होते हैं कि एक केस किस किस स्टेप से जाता है, तो उन चरणों को वहां पे पाद शब्द से युक्त किया है, चरण होता है संस्कृत में इसका। तो उत्तर पाद के अंदर जो प्रतिवादी होता था, जिसके खिलाफ केस किया जाता था, वो अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने संबंधित विषय पर यह कहता था कि मैंने किसी प्रकार का कुछ भी नहीं किया। फिर तीसरी स्टेप आती थी, अच्छा ये कह रहा है भाषा के अंदर कि मैं, आप गुनहगार हो, उत्तर पाद में आप कह रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तो ठीक है आप अपना एविडेंस दीजिए। तो तीसरे चरण पे आता था साक्षी क्रियापाद जिसे बोलते हैं। मेरा टॉपिक उसी से है। आज के समय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अंदर, शायद मैं करेक्ट हूं तो बर्डन ऑफ प्रूफ वहीं पे लिखा है, 101 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट है। और आज के जुडिशरी में ये है, आजकल हमारे विवाद तारीख पे तारीख वाला कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे हैं, सबसे बड़ी वजह बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट ही मुझे गलत लगता है। जिसने केस किया उसके बाद न्यायालय में हर व्यक्ति जो वादी और प्रतिवादी है वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए प्रमाण देता रहता है, और वो कभी प्रमाण दिया, कभी उसको काटा, कभी ये सब काउंटर चलता रहता है। प्राचीन न्याय व्यवस्था में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था झमेला। सीधा इसको बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? आज के समय में बर्डन ऑफ सबको है, जो केस दर्ज किया उसको भी है, जिसके खिलाफ किया उसको भी है, लेकिन वहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ डिसाइड किया जाता था। जिसने केस किया, जिसके खिलाफ केस किया, उसके ऊपर वो प्रूफ करेगा कि मैंने नहीं किया, तो बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफर हो गया डायरेक्टली। और उसको ये सहमति देनी पड़ती थी कि यदि ये जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ऋण का प्रकरण लेते हैं, किसी ने किसी से पैसा लिया, उसको ऋणादान कहते हैं। किसी ने किसी से पैसा लिया, अगर एक व्यक्ति है, अगर मैं सामने सर से बैठी हूं, मैं सर को ही अपने विवाद में शामिल कर लेती हूं। अगर मैंने विवाद किया कि सर राजा के सामने कि इन्होंने मेरा पैसा लिया है, ठीक है, और यदि ये जाके न्यायालय में ये कह दे कि मैंने तो पैसा लिया ही नहीं, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ इन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये प्रूव करेंगे, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं मुक्त हूं। अब ये प्रूव करेंगे मैंने लिया था लेकिन लौटा दिया, ये एविडेंसेस है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत सरल हो गई, जजमेंट बड़ी आसानी से निकल सकता था।
कि मैंने लिया ही नहीं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर है कि मैंने दिया कैसे। तो कॉन्सेप्ट में ये होता है कि भार कैसे कम करें, न्यायालय के ऊपर जो बर्डन चल रहा है उसको हम कैसे करें। तो मुझे लगता है बर्डन ऑफ प्रूफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाना चाहिए। अब बात आती है, जब हम प्रमाण की बात करते हैं, जिसे क्रियापाद कहते हैं, इसमें प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं। उस प्रमाण में स्मृति काल में 4 तरह के प्रमाणों की उपयोगिता थी: लिखित प्रमाण, भुक्ति प्रमाण, साक्षी प्रमाण और दिव्य प्रमाण। अब सोचेंगे दिव्य प्रमाण क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आया। कहा कि मनुष्य मानवीय दृष्टि से सिर्फ 3 ही प्रमाण होते हैं और चौथा जो प्रमाण है वो दैव्य प्रमाण है। आज के समय में कह देंगे मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है दिव्य प्रमाण में। कॉन्सेप्ट सुनिएगा, 3 प्रमाण के अंदर पहला प्रमाण होता है लिखित प्रमाण। लिखित प्रमाण का मतलब क्या है कि आपके विवाद के संबंधित आपके पास हर लिखित एविडेंसेस है, आप न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर आपका निर्णय हो जाएगा। फिर आता है भुक्ति प्रमाण। भुक्ति प्रमाण के बारे में एक लाइन आती है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, परेण भुज्यमानाय, एक लाइन है कि दूसरे के द्वारा भोग किया गया धन। कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात है और हमारे न्यायालय ने जजमेंट दिया है अभी 2019 के अंदर रिवर्स पोसेशन राइट का, कि आपका उत्तराधिकार उल्टा हो जाएगा। सुना है? रिवर्स पोसेशन राइट अभी मिला है कि अगर आप 11-12 साल तक यदि आपकी जमीन पर किसी ने अधिकार किया तो वो जमीन आपकी नहीं बल्कि जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। सॉरी, एडवर्स पोसेशन, सॉरी। तो ये वर्ड वहां पर यूज हुआ है। आज 2019 की सदी में जाके ये हम लोगों को मिल रहा है, जबकि इंडियन एविडेंस शायद भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अंदर सिर्फ इतना कहा गया है कि यदि आपको भूमि पे कब्जा साबित करना है तो सिर्फ कागज दे दो, सिर्फ इतना ही है। ये एक ही लाइन है बस वहां पर। इसकी डिटेल चर्चा कौटिल्य अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति में लिखी गई है। यदि आपका धन किसी ने 20 साल तक प्रयोग किया तो वो धन फिर आपका है ही नहीं, और यदि जमीन आपकी किसी ने 10 साल तक प्रयोग करी तो जमीन भी आपकी नहीं है। और हम आज के जजेस, माननीय जजेस, जो भी बेंचेस, 3 लोगों की बेंचेस थी, मुझे नाम याद नहीं है, उन बेंचेस ने कहीं रेफरेंस नहीं कोट किया कि हमने उठाया कहां से विचार। आप पुराने धर्म ग्रंथों से विचार उठाते हो और आज के समय में प्रमाणिकता देते हो कि 12 साल तक किसी ने कब्जा किया तो कब्जा जिसने किया उसका हो गया, लेकिन कहीं ये प्रमाण नहीं दिया कि कहां से उठाए। फिर वो जो मैकाले के उसमें एंट्री मारता है तो हम कहते हैं सब मैकाले ने लिखा है कुछ। It is under section 6 of specific relief act, that for the possession perspective. Section 6 of specific relief act. This point of view. हाँ, Actually, section 6 is pertaining to the possession of the recent. Yes. But this judgment is the based of the adverse possession. उसमें कोई मुझे सेक्शन नहीं पता, Article 65 of the Limitation Act. लेकिन जिसमें मैंने सिर्फ राइट के बारे में हल्का सा डिटेल चर्चा है वो धारा 90 है। This act come into the 1963 replace of the previous Limitation Act. After that, law is settled due to the scuttle of the litigation. Now the section is launched. Before that, this time period is 30 years. 1963 limitation is modified and 12 years. मैंने सर पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। मैं संस्कृत के विद्यार्थी होने के बाद यदि इस तरह का एंट्री करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं तो खुद ही अपने आप को कह सकती हूँ कि मेरा शून्य लेवल है, एकदम बिल्कुल नील है। हाँ, थैंक यू सर। ओके, जस्ट सर ने पीछे से हिंट दिया कि टाइम हो गया, मेरा तो अभी इस टॉपिक ही शुरू नहीं हुआ। तो मेरा टॉपिक था प्रमाण जब प्रस्तुत करते हो तो विटनेस तो देने पड़ते हैं, साक्षी, जिसे साक्षी बोलते हैं। आज के समय में भी फॉल विटनेसेस के कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। कौन सी धारा है मैं भूल गई हूँ, इतना डिस्कशन हुआ। बस मैं बता देती हूँ कि हमारे स्मृति ग्रंथों में क्या क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि साक्षी वो है जिसने खुद अपनी आंखों से उस विषय को देखा है। तो एक लाइन आती है, संदिग्धेषु च कार्येषु, संदिग्ध कार्यों में, किसके संदिग्ध कार्यों में? द्वयो विविध मानयो, 2 प्रकार के विवादित पक्षों के संदिग्ध कार्यों में, श्रुत जिसने सुना है, दृष्ट जिसने देखा है, और अनुभूतत्वात् और जिसने अनुभव किया है,
साक्षिव्य, वो साक्षी होगा। और यही परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 60 धारा 60 करेक्ट है ना? वो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अंदर सेम ये लाइन लिखी है कि कोई व्यक्ति किसी भी विवाद में तभी साक्षी बन सकता है जिसने उस घटना को देखा है, सुना है, अनुभव किया वाला नहीं है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे कहा कि मान लीजिए अनुभव किया है, रात्रि में कुछ ऐसा घटनाक्रम देखा, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं गए, लेकिन उस घटना के जो ध्वनि थी उसके माध्यम से आपने अनुभव किया कि शायद हो सकता है। ठीक है, साक्षी। स्मृतिकारों ने कहा कि आज के समय में Dr. Vibhag, I am a very liberal person. These people are very tolerant. But don't put us to test because already we got 3 more persons. सर 5 मिनट में कंप्लीट कर दे। Okay. बस टॉपिक के बारे में बता दें ताकि मुझे अपने डाउट्स भी मिल जाए वहां से। तो स्मृतिकारों ने विवादों के अंदर 3 प्रकार के साक्ष्यों को वरीयता दी। कहा कि कम से कम किसी भी निर्णय तक जाने से पूर्व हमें उस विवाद में कम से कम 3 साक्षी होने ही चाहिए। लेकिन कहीं रिलीफ दे दिया, और रिलीफ दिया कि जिसको हम फौजदारी मामले कहते हैं, उस समय फौजदारी मामलों में आता था साहस प्रकरण, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य और स्त्री विवाद। कहते थे ये 5 कुछ मेजर ये संवेदनशील मामले हैं जिनके अंदर यदि एक भी गवाह मिल जाए वो भी चलेगा, लेकिन अन्य विवादों के अंदर कम से कम 3 साक्षी होने चाहिए। और उन साक्षियों के लिए योग्यता भी बता दी कि बालक नहीं होना चाहिए, वृद्ध नहीं होना चाहिए, शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें असमर्थता है, और यदि इन व्यक्तियों को गवाह बनाया गया तो हो सकता है कि किसी मजबूरी का कोई फायदा उठा ले। तो एक बहुत बड़ी 100 के आसपास 100 व्यक्तियों की लिस्ट नारद स्मृति में दी गई है कि इन व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन कहा कि कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती है कि स्त्री से संबंधित कोई विवाद हुआ, वहां पे कोई भी गवाह नहीं मिला, तो कहा ऐसी स्थिति में किसी को भी, यदि कोई बच्चा भी यदि गवाह देने के लिए तैयार है जिसने देखा उस घटना को, लेकिन एक शर्त लगा दी कि वो न्यायाधीश के प्रश्नों को समझता और उसका उत्तर देने में समर्थ हो। और ये शायद हमारी धाराओं में भी है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। और कहा कि यदि कोई मान लीजिए पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने कोई साक्ष्य, जो भी साक्ष्य दिया वो गलत था, उसको कहते हैं कूट साक्षी। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी तक नहीं मिला कि जिसने विटनेसेस के साथ छेड़खानी करी हो उसको तो पनिशमेंट मिलता है, लेकिन जिसने पूरा सारा जो दिया वो सब झूठी बोला उसके आधार पर कोई दंड मिलता है साक्षी को, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है? तो मुझे डाउट यही से क्लियर हो गया। तो ऐसे कोर्ट साक्षी के लिए दंड की व्यवस्था थी कि ऐसे व्यक्तियों को प्लीज, हाँ सर, you will be given full marks, don't worry. Please, because it's already 8 o'clock, we have got 3 more speakers. ओके सर, मैं Please. Now I request Dr. Ajay Singh as the Thank you. professor and its impact on Indian criminal system. It's a comparative analysis. Honorable Chairman of this session, Dr. Rajendran sir, distinguished participants, eminent scholars who have come from different parts of this country. I must congratulate all of you for your patience. You have been listening since morning. I must thanks to you and all the participants who have come from different part of this country. I must thank to all of them, research scholars and dear students. इस आध्यात्मिक नगरी काशी में आपका काशी का प्रणाम। और इस the topic which I have chosen today, the topic is Vedic Jurisprudence and its impact on criminal justice system, a comparative analysis. So I would like to connect past with the present. With the help of my paper, I would like to connect past with the current present. How Vedic jurisprudence has played important role in development of Indian criminal justice system. Many of you must be knowing that
Indian criminal justice system has four important components: police, prosecution, judiciary, and correction home, jail. So how Vedic jurisprudence has played a vital role in development of this system? I would like to quote Smritis, Veda and Upanishad, where we can find all these four components of criminal justice system: police, prosecution, judiciary, and prison. Katyayani Smriti has categorized court into 6 categories. There were 6 types of courts in ancient period: family councils, Sreni, trade and professional councils, Gana, village assembly, architecture, court appointed by king. So this is the hierarchy of courts which we can find in Vedic period, and hierarchy of court is still prevailing in our country, which we can see, though there are some differences so far as dispensations, so far as administration of justice is concerned. There were 5 important punishments provided in ancient period: Vagdand, Dhigdand, and Dhanadand. Vagdand here means that is admonition. Law students might be knowing about probation and admonition provided in section 360 CRPC. So you see how that legacy we have incorporated in our legal system. Dhanadand, that is known as penalty. Angcheda means mutilation. Vadadand, capital punishment. So there were 5 punishments in ancient period, and still 5 punishments are in our Indian Penal Code. Section 53 specifically talks about 5 kinds of punishments which we can see in our legal system. The most important thing which I would like to quote about Indian criminal justice system, that is based on Manu Smriti. Even Manu Smriti makes it clear that a person who has committed any crime without guilty intention cannot be punished for that. So he can be exonerated from criminal liability if offense is committed without guilty intention. So we have followed that practice in our Indian criminal justice system, though there is Latin maxim on that. Law students might be knowing that actus non facetium nisi mensitria. But we never we have never been concerned with this text, and we teacher should take responsibility to quote, to cite our text, our ancient text, through which our student can understand that we have important ancient text which we have forgotten today. So there is specifically in Manu Smriti it is specifically mentioned that no person can be punished without unless act is committed with guilty intention. That is still, and you see that concept is very much recognized in chapter 4 of Indian Penal Code, so which we can. And second important thing is that which I would like to quote Vedic jurisprudence and fair trial. So fair trial is important component of criminal justice system. Accused has right to get a fair trial. So this concept was in existence during Manu Smriti, which I would like to quote. Manu Smriti chapter, in 3rd chapter, it is specifically mentioned that trial must be conducted in open court. You see, this concept was very much in existence in even in ancient period. Criminal trial must be conducted in open court. That can be seen under section 328 of CRPC.
trial must be conducted in open court. Another important thing which I have quoted, that is concept of compensation in Vedic period. You see, there was a concept in Vedic period. Manusmriti is very clear on this point. In Manusmriti, in 8th chapter, verse 287, talks about if limb is injured or blood flows, the offender shall be compelled to pay compensation to compensation. So it is specifically mentioned in Manusmriti also. And you see, judiciary being important component of criminal justice system has to play important role. And apex court, particularly Supreme Court of India, has played important role in evolving new compensatory jurisprudence. So, which we can see under section 357, 357A CRPC. So, what I am trying to justify, the point is that concept of compensation was in ancient period. Even Manu was in favor of compensating the victim of crime. Still that concept exists in our legal system. So, with the help of these quotations, with the help of these ancient texts, I have tried to connect past with present. Though Manusmriti has some demerits which different many scholars at different times have been citing those demerits, but I am not going to discuss that demerit. The positive aspect of that ancient text is that two things which we can see in our Indian legal system, that is right to fair trial and right to compensation, which victim can claim as a matter of right. So these two important features existed in ancient period. And in the light of this, Supreme Court has also recognized compensation as integral part of right to life and personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution. So I don't want to discuss case laws because many of you are not from legal background. तो मुझे बस इतना ही कहना है कि एंशिएंट टेक्स्ट जो हमारे हैं उसमें भी जो भारतीय न्याय प्रणाली है उसके अंतर्गत कैसे हमारा फेयर ट्रायल हो, कैसे अपराध पीड़ित को प्रतिकर प्रदान किया जाए, कैसे कोर्ट की हायरार्की है, अपेक्स कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायालय कौन होगा, मैटर कहाँ मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट से हायर कोर्ट एंड देन अपेक्स कोर्ट में जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे प्राचीन साहित्य में भी देखने को मिलता है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वी एज ए टीचर must take responsibility to teach our student to make them aware about our ancient text. हमें उन्हें प्राचीन साहित्यों के विषय में बताना चाहिए कि जहाँ पे हमारे प्राचीन साहित्य के अंतर्गत भी ऐसे बहुत सारी विशेषताएं हैं जो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के द्वारा उसको अपनाए गए हैं, न केवल इंडिया को, लेकिन हम उस अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। बहुत ऐसे मैं दो बातों के साथ अपने आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस टॉक। हम अपने सभी जब कभी बात करते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी की तो शेक्सपियर को कोट करते हैं। शेक्सपियर को कोट करते हैं इसलिए कि शेक्सपियर मीन्स सेज दैट नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। तो हम इस चीज़ को अपने स्टूडेंट को भी बताते हैं कि शेक्सपियर को बताने में वी फील ऑनर कि मैं शेक्सपियर को जानता हूँ। शेक्सपियर कहता है कि नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। कोई चीज़ अच्छा बुरा नहीं है, विचार हमारे उससे अच्छे और बुरे बनाते हैं। और वो हम ये नहीं बताते कि हमारे एंशिएंट लिटरेचर में लिखा हुआ है कि
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूर्तियाँ तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसको उसी रूप में प्रभु दिखता है। किसी के लिए वो पत्थर है, किसी के लिए वो भगवान है। तो विद दिस वर्ड आई वुड लाइक टू, without taking much time, I would like to conclude my talk. So thank you. Thanks, Dr. Adeshi. Now I call upon Dr. Rishi. She is a professor of sociology, and says that she will finish the speech in 5 minutes. Okay. So I congratulate you, her on your behalf. Good evening to all and state dignitaries, all other dignitaries. Okay. मैं सोशियोलॉजी की और सोशल वर्क के स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट मतलब मैं टीचर हूँ, और मेरा जो टॉपिक है दैट इज पिनोलॉजी इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम बात करते हैं तो पिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो लॉ का सब्जेक्ट होता है या फिलॉसफी का सब्जेक्ट, या फिलॉसफर मानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट होता है। पिनोलॉजी का मतलब है कि स्टडी ऑफ क्राइम, कि हम किस तरह से अपराध को समझ सकते हैं। मगर जब प्रश्न मेरे उस पर आता है कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया कि पिनोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो सोशियोलॉजी जो कि अगर हम कहें समाज और लॉ या सोसाइटी में जब हम प्रैक्टिस करते हैं लॉ, उसका इम्पैक्ट हमें दिखता है। तो जो भी क्रिमिनल है, क्या वो क्रिमिनल या क्राइम जो किया है उसने, उसका क्या रीजन है, अगर हमें ये पता नहीं होगा तो शायद हमारा जजमेंट भी सही नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे, क्योंकि जो मेरा पेपर है वो तो बहुत बड़ा लिखा है मैंने, तो मैंने सर को प्रॉमिस किया कि आई कंप्लीट इन 5 मिनट्स, क्योंकि मैं बहुत टॉकेटिव पर्सन हूँ। अगर मुझे उससे ज़्यादा टाइम दिया गया तो मैं घंटे तक बोल सकती हूँ। तो मैं अपना सिर्फ 5 मिनट में मैंने पेपर में क्या मेन लिखा है वो बताती हूँ। तो पिनोलॉजी कॉन्सेप्ट में नहीं जाती हूँ, आप सभी विद्वजन हैं और सभी जानते हैं कि पिनोलॉजी क्या होती है, लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो लॉ से रिलेटेड है। दूसरा होता है इवोल्यूशन ऑफ पिनोलॉजी सिस्टम, या सेंटेंस जो हम करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस किया जाता था। तो हर युग में, क्योंकि हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, एंशिएंट में मुझसे पहले जो मेरे स्पीकर थे उन्होंने एंशिएंट पीरियड के बारे में, मनु के बारे में और कौटिल्य के बारे में बता दिया है, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगी। तो हमारे मेडिवल पीरियड में भी कुछ सिस्टम थे, डेटरेंस था मेजली और रेट्रिब्यूटिव था। तो डेटरेंस और रेट्रिब्यूटिव एक सेंटेंस करने का तरीका है जिसको हम अपने अप्रोच में लेकर आते हैं। तो इसमें डेटरेंस थ्योरी होती है जिसमें हम लोगों पर रोक लगाते हैं ताकि क्राइम ना बढ़े। रेटरेंस इसी से संबंधित रेट्रिब्यूटिव भी होता है जिसमें हम निषेध करने की कोशिश करते हैं। वन इस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव, यानी समाज में जो अपराध हो रहा है उसको हम रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंशन। क्योंकि सोसाइटी में जो क्राइम कर देते हैं या किसी वजह से किए हैं तो वो सोसाइटी के लिए भी खतरा हो सकते हैं, तो हमें सोसाइटी को भी बचाना है, तो उसके लिए हम प्रिवेंटिव अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंटिव के बाद हमारा रिहैबिलिटेटिव अप्रोच भी आता है। ऐसा मानना है कि जिसने क्राइम किया है अगर उसको सजा मिल जाती है तो उसका हमें रिहैबिलिटेशन भी करना चाहिए और समाज में उसे दोबारा से पुनर्स्थापित करना चाहिए। इसके बाद एक हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है रेस्टोरेटिव जस्टिस। समाज में यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो प्रिंसिपल ऑफ विक्टिमोलॉजी होता है कि हमारे साथ अगर गलत हुआ है तो हम भी चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है वो सजा पाए। दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेटिव जस्टिस, और इसको हम प्रिंसिपल ऑफ विक्टिमोलॉजी की तरह से मानते हैं। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम सेंटेंस के बारे में करते हैं। फिर आता है कि सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में हम इमाइल दुर्खाइम का नाम सुने हैं, हमने फुको का नाम सुना हुआ है, हमने कह सकते हैं कि फंक्शनलिस्ट थ्योरीज में वेबर का नाम सुना है। इन लोगों ने भी क्राइम के अलग अलग तरीके बताए हैं। तो ये जो बताते हैं इनका तरीका है डेटरेंस और रेट्रिब्यूटिव ही मॉडल को फॉलो करते हैं। फुको का मानना है कि जो समाज है वो प्रिजन का जो कॉन्सेप्ट है उनका, कि हमें समाज में ऐसा बनाना चाहिए कि हम निगरानी में रहें, क्योंकि हम कुछ गलत करते हैं, अगर हमारे ऊपर सर्वेलियंस होता है तो हम गलत काम करने से पहले करते हैं। यदि हमें चोरी करना है, मैं यहाँ से इजीली चोरी कर लूँगी अगर कोई मुझे देख नहीं रहा है, बट अगर कोई देख रहा है या सर्वेलियंस के अंदर है मैं चोरी नहीं करूँगी। तो दैट इज ऑल्सो, तो ये फुको का मानना है, इस तरह का है। तो सोशियोलॉजी जो कि समाज में है तो उसके कुछ हमारे अप्रोचेस होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि साइकोलॉजिकल अप्रोच भी है कि हमारी मनस्थिति कैसी होती है, सिचुएशंस कैसे होते हैं उस पर। जैसे हमारे सर सोधी सर ने पहले ही बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या है,
कैसे हम करते हैं ये भी है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अगर हम कहें तो इंडियन पिनल कोड में जो हमारे क्राइम का जो है कि हमारे 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जो कि आप सभी जानते हैं। तो उसमें हम उस सेंटेंसेस को कैपिटल पनिशमेंट रेयर टू द रेयरेस्ट को दिया जाता है कि सारे साक्ष्य सही हैं, कुछ गलत नहीं है, हम उसके बाद ही उस पर करते हैं। और उसके बाद क्योंकि कहते हैं ना डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस हरीड जस्टिस वरीड जस्टिस। तो कभी कभी हम इनको फॉलो करते हैं। तो ये जो हमारी थ्योरीज हैं ये मदद करती हैं कि हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होते हुए भी समाज में क्राइम को किस तरह से रोक सकते हैं। और हमारा पर्पस है कि क्राइम को रोकना और क्रिमिनल्स में जो उनकी मनस्थिति है उनको सुधारना है। हम कहते हैं ना, एक डायलॉग है लास्ट में कि पापी से घृणा मत करिए, पाप से घृणा कीजिए। तो हमें पाप से, दैट्स मीन जो क्राइम कंडक्ट हो रहा है उसका रीजन फाइंड आउट करना चाहिए। और एज ए सोशियोलॉजिस्ट मैं कॉजल और फंक्शनल रिलेशंस को पता करती हूँ कि समाज में जो ये घटना घट रही है उस घटना घटने का कारण क्या है और वो कारण किस तरह से हम ढूंढ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लॉ कह सकते हैं नॉलेजेबल पर्सन्स हैं जो कि कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। Manusmriti. Chairperson sir, distinguished speakers and distinguished participants. I am Kosraj Nepani from Nepal. Since the morning, I think I am only one from outside India, but not so far because my house and where I am staying in Biratnagar is border to India. My hometown is border to Indian two states, Bihar and West Bengal, and Biratnagar is bordering with Bihar. So first of all, I would like to thank Vedic Vigyan Kendra of Kashi Hindu University for giving us the opportunity. I am using the word us because my senior advocate Dilip Dal is also participating from Nepal, Biratnagar, in center of this hall. Probably this may be the shortest presentation of today. I am sure. I will make sure. And as I already told that I am near from India, तो हम कुछ हिंदी तो बोल ही सकते हैं, काम चलाओ। ये मेरा अध्ययन था, वेद में भी कई लीगल टेक्स्ट हैं, सेवरल टेक्स्ट आते हैं, तो उसमें मैं आई वॉज लिमिटेड ऑन मनुस्मृति ओनली। तो मनुस्मृति में स्मृति का जो पनिशमेंट, न्याय, प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, वो बात कहते हैं हम। तो उसमें विक्टिम पर्सपेक्टिव क्या है? तो अभी हम बोलते हैं मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में विक्टिमोलॉजी, राइट्स ऑफ द क्राइम विक्टिम्स, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन है कि नहीं, ये मेरा रिसर्च था। तो इसमें कुछ पाया गया है कि यूएन डिक्लेरेशन 1985 और नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट लॉ है विक्टिम्स के राइट के लिए, वो उनमें जितने भी प्रावधान हैं, द प्रोविजंस रिलेटेड टू द क्राइम विक्टिम्स, ये कहना अनुचित नहीं हुआ कि मनुस्मृति से इनहेरिट किया हुआ है कई प्रावधान। तो हम इसमें we can be proud. Also, ancient Vedic legal texts such as the Manusmriti have made significant contribution to the development of modern human rights jurisprudence. ये मेरा conclusion है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम मनुस्मृति टेक्स्ट as such, if we read, we cannot find the word victim justice. This is the problem. But what can we do? For example, यूएन में भी कई सारे सॉफ्ट एंड हार्ड लॉ एडॉप्ट किए, तो उनमें से किसी का पूर्णता नहीं है, किसी का लैंग्वेज आर्टिकल्स है वो पूर्णता नहीं है, उसको किया जाता है इंटरप्रिटेशन बाय द यूएन ट्रीटी बॉडी और कोर्ट्स। तो मनुस्मृति का जो प्रोटेक्शन का वहाँ चर्चा है, मनुस्मृति में जस्टिस का चर्चा है, मनुस्मृति में वो जो फाइन का चर्चा है, पेनल्टी का चर्चा है, उसको हम इंटरप्रिटेशन करके विक्टिम जस्टिस पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मनुस्मृति is the best foundation for today's UN Human Rights Declaration or Nepalese legal system on rights of the crime victims. Thank you so much. So thank you very much. In fact, we have been wrongly, our time is very wrong. The timing is very wrong for us. In fact, this team
is a very intelligent team. They got so much of information to tell. But unfortunately, we have been given this time. And I congratulate you, all of you. I have never seen such an orderly crowd. It's a very good thing, especially in a law college, especially this kind of, because I also been in a law college. I know how things work. But here, you are extraordinary. I think most of you will become judge, I think. So I was talking to our earlier presenter, Mr. Ravikumarji, and I tried to connect the article written by Professor Swain. Professor Swain has written that in Manuskriti, in case of alleged rape, no witness is required by Manu. Mere statement is sufficient to prove the guilt. This is Manuskriti. Ravi Shankar ji was telling in one of the countries, I will tell you the country's name in person, or you can ask Ravi ji. In one country, if a rape is to be proved, it should be supported by 4 witnesses. 4 witnesses has to prove that this thing had happened. Then only it will be accepted. Otherwise, she will be declared as a war. That kind of thing is available still now. This is a law till now. But see the common sense. See how Manu has understood the female psychology. Because normally female will not divulge anything, anybody in a wrong perspective. She will not give false accusations, especially in this matter. He has understood. That is why he says her mere statement is enough. That kind of understanding our forefathers had, and we are all very, very much thankful to them for their common sense and for their understanding of human beings. Thank you very much. का पैगाम है। तो आज का दिन इस तकनीकी सत्र के साथ यही समाप्त होता है, लेकिन कल हम फिर मिलेंगे इसी मोटिवेशन के साथ, इसी प्रेरणा के साथ और इसी एकेडमिक डिस्कोर के साथ, ताकि हम इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय को और आगे वहां तक ले जाएं जहां तक ले जाने का उद्देश्य लेकर हमने इसको शुरू किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।